जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर मोहम्मद अली शाह और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं अपने एक बहुत पुराने कलीग, पुराने सीनियर, पुराने साथी के साथ अभी गुफ्तगू में होऊंगा, जिनके साथ मेरी बहुत ही अच्छी यादें हैं। हम जम्मू कश्मीर में, मैं जगह का नाम नहीं लूंगा, जम्मू कश्मीर में हम एक जगह पे साथ में सरहद के बहुत ही करीब थी वो जगह, और वहां पे हमने एक बहुत ही कामयाबी से साथ में एक ऑपरेशन किया था हमने। एंड सर, हम दोनों उस टाइम पे लेफ्टिनेंट साहब थे, ठीक है। तो सर की बहादुरी देख के मैं बहुत इंस्पायर हुआ था, बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ था। तो उसके बाद फिर सर बहुत बाद में, उसके बाद फिर आर्मी एविएशन में आ गए, और नॉर्थ ईस्ट का भी इनका लंबा तजुर्बा रहा है, वो तवांग सेक्टर और वहां से उड़े हैं, और बेसिकली असम, काफी इनका तजुर्बा बड़ा अच्छा है। आप देख सकते हैं सर का पैशन। सर ने, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, द टाई आई कैन सी हियर, इट्स अ सी टाई सर। या ये होता है पैशन, ये होता है जज्बा, जुनून। जैसे मैंने सर असम राइफल्स टाई पहन रखी है क्योंकि आई हैव दिस लव फॉर द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। उसके बाद फिर सर ने अभी हाल ही में पिछले महीने, सर हैज टेकन प्री मैच्योर रिलीव फ्रॉम द आर्मी। वो बाहर आए हैं। ही हैज डन हिज मैनेजमेंट फ्रॉम आईआईएम बॉम्बे। अब आप बोलेंगे आईआईएम अहमदाबाद तो सुना है, आईआईएम बॉम्बे नहीं सुना आपने कभी? ऐसा हो सकता है, उसके बारे में बताएंगे क्यों नहीं सुना होगा ये। जी हाँ, आप बताएंगे। इट्स बिन रीनेम्ड एंड इट्स वन ऑफ द very doing really well. So we will go ahead and we will talk. We will refresh our old memories and we will talk about what Sir's plans, his experience in life has been, and how he's planning to utilize that experience in the life ahead in the second innings now. And before that, let me tell you, अभी 2-3 साल पहले मैं कलकत्ते गया था एक प्ले करने के लिए। जब मैं जनरल मनोज पांडे, द करंट चीफ, एंड ही वाज द आर्मी कमांडर इन द ईस्टर्न कमांड, तो उनके लिए खास तौर से हमने ईस्टर्न कमांड के लिए प्ले किया था 71 की लड़ाई। और उस टाइम पे सर से मुलाकात हुई, एक्सीडेंटली वी बम्प्ड इनटू ईच अदर इन एओआई। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, तकरीबन 20 साल के बाद हम मिले थे। सर वाज द सेम पर्सन, सेम लुक, सेम फ्रेंडलीनेस, सेम वार्मथ, जैसे अभी आप देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं with an officer who I really look up to a lot. And मैं जानबूझ के कैप्शन, आप पढ़े होंगे ना, कैप्शन लिखा है one of the bravest army personnel, आर्मी ऑफिसर नहीं, मतलब सोल्जर्स, जवान भी हो, ऑफिसर भी हो, आर्मी पर्सनल आई ऑपरेटेड विद लेफ्टिनेंट कर्नल मदन ठाकुर। मैंने, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि ब्रेवरी का मतलब ये थोड़ी कि अगर आपने केवल परमवीर चक्र या अशोक चक्र जीता है, या कीर्ति चक्र जीता है, या महावीर चक्र जीता है, या शौर्य चक्र जीता है, या तो आप बहादुर हैं। You can be brave otherwise also. And sir got a commendation card for that operation, which I personally believe, because I was witness to that operation, right? I personally feel that he deserved much more, but that's okay. We never work for all those things. We do our work. But sir, मेरे को इतनी खुशी हो रही है ना आपसे बात करके, इसलिए मैंने 3 मिनट तो ऐसे ही निकाल दिए हैं। मैं आपसे 30 सेकंड से ज्यादा लगातार नहीं नॉर्मली, मगर सर लेट्स गो अहेड स्ट्रेट एंड लेट्स टॉक टू। उससे पहले मैं, ये सर वाज कमीशन, एंड देन सर ने ऑप पराक्रम ने भी हिस्सा लिया है, उसके बाद पठानकोट, गुरदासपुर, अखनूर, एंड उसके बाद ही वेंट ऑन आर्मी एविएशन। सर हैज डन वंडर्स इन हिज करियर। So let's go ahead and talk straight to sir. Sir, Jai Hind, and thank you very much for sparing time, sir. Jai Hind, Ali, Jai Hind, and thanks a lot. Thanks for inviting me. Sir, thank you, sir. So you were commissioned in 8C Clay, a very good Paltan. So let us go through your experience. And आप क्या फौजी बैकग्राउंड से आते हैं? आपको फौज में आने की प्रेरणा कैसे मिली, और आपके एकेडमी के दिन कैसे थे, आपकी ट्रेनिंग के दिन? मैं 8 सिक्लाइट इन्फेंट्री, मैंने जब आईएमए में ऑप्शंस भरते हैं फॉर ऑप्टिंग दी व्हाट आर्म यू वांट टू गो इन, आई ऑप्टेड फॉर इन्फेंट्री। एंड इन्फेंट्री में स्पेसिफिकली मैंने सिक्लाइट इन्फेंट्री भरा था। एंड मेरा कोई आर्मी से बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन हमारे एनडीए में एक एडजुटेंट होते थे, दैट टाइम मेजर, लेटर ऑन बिकेम आई थिंक मेजर जनरल संजीव राय। तो आई न्यू ओनली वन गाय कि ओके माय एडजुटेंट वाज देयर फ्रॉम सिक्लाइट, तो आई वुड लाइक टू गो फॉर सिक्लाइट इन्फेंट्री। So Sicklight Infantry opt करके I was commissioned into 8 Sicklight Infantry, and without any knowledge of army pre-background, nothing. I'm the first generation. My grandfather was in the British Army, and he retired at that time only. So 8 Sicklight Infantry commissioned into in 10 December 2002, and the initial posting was in Gurdaspur, and within short span of 6 months, the unit moved to the location for which we are more excited to talk about in the actual. Absolutely. Yeah. So So that 8 Sicklight Infantry, 8 Sicklight Infantry, 8 Sicklight Infantry commissioned into 10 December 2002, and the initial posting was in Gurdaspur, and within short span of 6 months, the unit moved to the location for which we are more excited to talk about in the actual. So that
that 10 months of service and getting into that field, that was excitement which you have also felt and I also felt at that time कि कुछ तो करना है. And as you are aware कि these chances और ये मौके बहुत कम आते हैं, and जब भी आते हैं you have to be really lucky that you become part of it, and once you are part of it they stay with you throughout your life. You cherish those moments, you live those moments again and again. So that's what like I got वो into. भी सर अपने करियर की बिल्कुल शुरुआत में एज अ यंग लेफ्टिनेंट साहब, आई मीन जो मौका आपको मिला वाकई, एंड जो आपने बहादुरी भी दिखाई सर वाकई में, आई मीन इट इज समथिंग व्हाट सर डिड वाज एक्चुअली गाइस, इट वाज अनइमेजिनेबल, अनथिंकेबल. ओके, सो आई वी विल कम टू दैट सर. तो ऑफ प्रोग्राम के बाद आप वापस आए, पीस में आए, फिर आपका तबादला हो गया जम्मू कश्मीर में. तो जम्मू कश्मीर के इलाके में जहाँ पे मैं नया लेफ्टिनेंट था, नया न्यूली फ्रेश, न्यूली कमीशन, मैं रजौरी से आया था वापस सीबीएस रोल से उसी दिन. तो एक बड़ा लंबा ट्रैफिक जैम मिला रजौरी से नीचे उतरने का. तो हमें क्यों, क्या हो गया कि यहाँ पे आगे ऑपरेशन चल रहा है, गोलियां चल रही हैं, और आगे कुछ मिलिटेंट आ गए थे घर में, कोई टेररिस्ट आ गए थे, तो फौज इज ट्राइंग टू फ्लश देम आउट. जैसे ही मैंने ये सुना, आई वाज न्यूली कमीशन, आई वाज ब्लड थर्स्टी, आई वाज अ हार्डकोर स्पेशल फोर्सेस ऑप्टी एक्चुअली अकेडमी में. वो अलग बात है, मैं आर्टिलरी में गया, वो भी एक कहानी है अपने आप में. एंड देन वी स्टॉप्ड एट टांडा टीसीपी. फिर हम काफी लंबा वहां पे रुके रहे, घंटों वहां पे रुके रहे, क्योंकि ऑपरेशन चल रहा था. बाद में मोमेंट आई रीच माय पलटन आफ्टर रजौरी, वी वर टोल्ड कि ऐसा हो रहा है. आई वेंट टू माय एडजुटेंट, तब कर्नल विनय मेहता वाज कैप्टन विनय मेहता. आई बेग्ड हिम, सर प्लीज सर, कैसे भी करो, आई वांट टू गो. ही सेड नहीं, यू कांट गो. अपना वो अपने दुनिया में मस्त थे वहां पे, बट ही वाज डूइंग हिज वर्क. He was too busy with his work. So he said, you cannot go. Then I went to my CEO, Colonel Naval Kapoor. I begged him, literally, I had to, sir, please, I'm newly commissioned. I'm battle hardened. I need to go. So anyway, sir, then उसके बाद हम आपकी लोकेशन पहुंचते हैं. And there I'm told by another lieutenant साहब, जो मेरा कोर्समेट था, लेफ्टिनेंट प्रवीण शर्मा, अभी कर्नल प्रवीण शर्मा है, वो भी आर्टिलरी से है. He said, पता है, एक लेफ्टिनेंट साहब ने घर में घुस के, जैसे है ना, अभी आप सुनते हैं, ये 2003 की बात है ये, बाय द वे, घर में घुस के अभी क्लीन हाउस एंट्री. मैं क्या बात कर रहा है, हाउस एंट्री, वी आर ओनली सीन इन मूवीज. अरे ये घर में घुसते हैं, आई वाज, एंड फिर मैं देखा दूर से एक लेफ्टिनेंट साहब खड़े थे, AK-47 लेके, आर्म टू हिज टीथ, वो बीपीजे पटका पहन रखा था. मतलब मेरी नजरों में ना रैम्बो से कम नहीं थे वो लेफ्टिनेंट साहब जिनकी मैं बात कर रहा हूँ अभी. तो मैं यार, व्हाट्स हिज नेम, नाम क्या है, ही इज वेरी ब्रेव, लेफ्टिनेंट ठाकुर. मैं अच्छा. तो फिर मैं आया हथियार का, जैन सर, सलाम, सल्यूट किया, एंड सर वाज वेरी वार्म. वी हग्ड ईच अदर इंस्टेंटली, एंड देन आई टोल्ड हिम, सर प्लीज डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस टू मी. एंड फिर सर व्हाट ही टोल्ड मी वाज, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे. नाउ वी लीव इट टू सर. सर आप थोड़ा उस ऑपरेशन के बारे में कुछ बताना चाहेंगे सर? Sure, man. I'll just take you back with some interesting stories or facts, I must say. I believe I was just मतलब I was slated, या भगवान ने चूज कर रखा था कि I'll be part of that operation, because इस ऑपरेशन में 3 टेररिस्ट इन्वॉल्व थे. इनिशियली उन्होंने एक रात पहले शालीमार एक्सप्रेस को डिरेल किया था. उसके बाद उन्होंने टाटा इंडिका को हाईजैक किया, उसके अंदर जो 3 ऑक्यूपेंट थे उनको शूट कर दिया था, और उसके बाद उन्होंने एक टाटा सूमो को हाईजैक किया, और उसके बाद उसमें वो फिर अखनूर की तरफ चल पड़े थे ना. जब ये चीज़ रात को हो रही थी, यू वोंट बिलीव, उस शाम को मैं छुट्टी पे था दिल्ली में, लेकिन मुझे अगले दिन अपनी यूनिट को ज्वाइन करना था, तो मैं बस से आ रहा था. तो जब बस पहुंची जम्मू के आसपास, तो शालीमार एक्सप्रेस जो डिरेल हो चुकी थी, उसके पैसेंजर्स सड़क पे आके देवर जस्ट बोर्डिंग, वो जो बस आ रही थी उनमें हेल्प लेके जम्मू की तरफ जा रहे थे. तो आई हैपन टू इन दैट बस एट दैट टाइम. सो उन्होंने बोला कि ट्रेन डिरेल हो गई है, इसलिए हम लोग जम्मू की तरफ वापस जा रहे हैं. सो आई नेवर न्यू कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन. फिर जम्मू ट्रांजिट कैंप पहुंच के पता लगा कि कॉन्वॉय बंद है, नहीं जा पाएगा, सो वहीं रुकना पड़ेगा उस दिन. सो मैंने फिर ट्रांजिट कैंप में रजिस्टर कर लिया खुद को. लेकिन फिर एक कर्नल साहब मुझे मिले, उन्होंने बोला कि मेरी जिप्सी आ रखी है एंड मेरा वहाँ पहुँचना ज़रूरी है, अगर आपने चलना है तो चलो. तो मैंने बोला सर, मोर देन हैप्पी, मतलब यंग लेफ्टिनेंट ईगर टू ज्वाइन हिज यूनिट आफ्टर छुट्टी, और मैं बेसिकली दिवाली मनाने के लिए घर पे गया था, तो दिवाली मना के आ रहा था.
सो बैठ के मैं जम्मू में मतलब अखनूर में पहुंच गया। अखनूर में मतलब उस टाइम पे क्या हुआ था कि 3 में से 2 टेररिस्ट जो थे वो मतलब उनको एनकाउंटर करके न्यूट्रलाइज कर दिया गया था। सो इट वाज लाइक देयर वाज सम कंफ्यूजन दैट थर्ड टेररिस्ट हैज रन अवे या छुपा हुआ है, बट थिंग्स वर स्लाइटली कूल डाउन। सो मैं जाके अपने सीईओ को रिपोर्ट करता हूँ, तो सीईओ कहते हैं कि ओके यू आर बैक फ्रॉम लीव, सो ओके यू राइट नाउ गो रेस्ट एंड इन द नाइट यू माइट बी रिक्वायर्ड टू कॉर्डन द एरिया। ऐसा ठीक है सर। और मैं जाके अपने रूम में जाके अपना सामान वामान खोला, मतलब दोपहर हो गई थी और लगभग आई जस्ट हैड माई लंच और जाके अपना आफ्टरनून सिएस्ता टाइप में अपनी जो मेरी एक रूम रहता था वहाँ जाके मैं लेट गया। देन सडनली शाम को मुझे मैसेज आता है मेरे बडी का, आता है मेरे पास कि साहब आपको एडजुटेंट साहब ने बुलाया है ब्रिज के ऊपर। मैंने बोला शाम को बुलाया था, पता नहीं क्यों बुलाया होगा। तो एज डॉन वाज हैपनिंग मैं पहुंचा वहाँ पे जाके। सो मेरे कंपनी कमांडर थे मेजर आर के सिंह एट दैट टाइम मेजर आर के सिंह। तो वो मुझे लेके पहुंचे, मेरे सीईओ थे। उन्होंने बोला कि ओके ठाकुर यू आर रिक्वायर्ड फॉर समथिंग एंड आर के विल शो यू। तो आर के सर ने मुझे बोला ठाकुर इधर आ जा। मैंने उससे क्या बोले, तीसरा टेररिस्ट आ गया है और वो घर के अंदर छुपा हुआ है and it has been decided that house clearing drill will be carried out and you will be the one who will be carrying out the operation. So that's how I was introduced to my mission. That was the briefing on the spot. So I said like at that time moment I feel everybody will react in the same way because everybody even in fact अगर ये option अगर आपको भी मिलता तो आप भी एकदम excitement में ना कि हाँ बस यही मौका है। So मैं भी बोला कि हाँ सर हो जाएगा। सो दैट टाइम ना माय माइंड स्टार्टेड वर्किंग बैकवर्ड्स कि हाउस क्लीनर ड्रिल आईएमए में कैसे सिखाते थे। मुझे आता उस्ताद पीछे पकड़ के रखता था कमरे में, बोलता था राइट शूट करो, लेफ्ट शूट करो, एंट्री मैन 1 एंट्री मैन 2। तो ऑल दोस ड्रिल्स ना स्टार्टेड गोइंग इन बैक ऑफ माय माइंड। तो कैस्पर में घातक प्लेटून जो रहती है आपको पता ही है इन्फेंट्री में ना। सो उनमें जो चूजन बंदे होते हैं 5-6 लोग एकदम लड़के एकदम फिट वाले होते हैं, उनको मेरे साथ बिठाया गया और एक कैस्पर वहीकल होता है एंटी माइन वाला, उसमें लेके जाया गया लोकेशन में। तो लोकेशन वाज वेरी पेक्यूलियर। देयर वर 2 स्ट्रक्चर्स, 2 स्ट्रक्चर थे, हर स्ट्रक्चर में 4 घर थे, 2 नीचे और 2 ऊपर। तो उसकी मिरर इमेज की ऐसी एक और बिल्डिंग, तो देयर वर 2 बिल्डिंग्स लाइक दैट। बोला कि इस बिल्डिंग में अभी ग्राउंड फ्लोर पे है या फर्स्ट में है नहीं पता, लेकिन वहाँ अंदर वो बैठा हुआ है टेररिस्ट और बाहर नहीं आ रहा है। 1-2 बार फायर किया है बट ही इज़ नॉट कमिंग आउट, ही इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग। आई सेड ठीक है रॉजर सर। सो देन आई वाज शोन एंड वो बगल वाली बिल्डिंग में ले जाके मुझे अपनी टीम के साथ मतलब छोड़ दिया गया, घातक टीम के साथ, कि नाउ यू डिसाइड हाउ यू हैव टू डू इट बट यू हैव टू डू इट। तो ये करते करते लगभग 8:30-9 रात के बज चुके थे जब मेरे को मेरी टीम मिली, पूरी ब्रीफिंग की गई एंड देन आई केम टू नो द होल स्टोरी। दैट स्टोरी इज स्लाइटली पेनफुल in the sense that terrorist he was hiding in the jungle, जो bushes थे पीछे वहाँ छुपा हुआ था और उस इलाके में टेररिस्ट हो सकता है ये किसी ने सोचा नहीं था। तो वहाँ पे कुछ बच्चे जो थे वो खेल रहे थे, तो उनमें से एक लड़का था 7 साल का, वो बुशेस के पास गया तो उसने उस टेररिस्ट को आई थिंक देखा और वो चिल्लाया, जैसे बच्चे शौक में चिल्लाते हैं ना, तो चिल्ला के जैसे ही भागा टेररिस्ट ने उस बच्चे को शूट कर दिया एंड दैट चाइल्ड डाइड। और उस लड़के की आवाज़ सुन के एक 9-10 साल की लड़की भी आई, उसने जैसे ही वो पहुंची तो टेररिस्ट ने उसको भी शूट कर दिया ना। आयरनी इज कि दैट गर्ल वाज द सिस्टर ऑफ दिस बॉय। सो इमेजिन 2 सिबलिंग्स डेड देयर ओनली। देन दैट टेररिस्ट केम आउट इन द ओपन, जो कोर्टयार्ड टाइप का रहता है, और उसने स्पोराडिक फायरिंग करी। लकीली किसी बच्चे को किसको नहीं लगी क्योंकि तब तक सब भाग गए थे। लेकिन जिस बिल्डिंग में जो टेररिस्ट घुसा हुआ था उसके ग्राउंड फ्लोर में देयर वाज अ लेडी। वो लेडी हल्ला सुन के जैसे घर से बाहर निकली तो ये टेररिस्ट सामने आया और इस टेररिस्ट ने उस लेडी को भी शूट कर दिया। एंड द फर्दर आयरन इज कि दिस लेडी वाज द मदर ऑफ दीज 2 चिल्ड्रन। सो इमेजिन विद इन 1.5 or 1 minute the family was wiped out except the father who was not there at that time in the house. This happened like how this terrorist came into that house. Then he entered, went up to the building और फर्स्ट फ्लोर में 2 घर थे, जैसे उसमें लेफ्ट वाले में अंदर एक बच्चा था 13-14 साल का और उसके 2 भाई बहन थे साथ में छोटे 7 ईयर और 5 ईयर्स के।
तब तक बच्चों में और बड़ों में थोड़ी सेंस आ गई थी। तो इस टेररिस्ट ने उस दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा दी थी, बड़े बच्चे ने, उसने उसको मतलब बार्ज इन किया। जब तक वो दरवाजे को तोड़ता तब तक उस 13-14 साल के बच्चे ने दिमाग लगा के क्या किया, बालकनी से नीचे 2 रजाइयाँ फेंक दी और उसमें पहले उसने अपने दोनों भाई बहनों को मतलब ड्रॉप किया और फिर खुद भी कूद गया। सो इट्स लाइक अ साइमल्टेनियस मूवमेंट कि जैसे ही टेररिस्ट अंदर घुसा तब तक अंदर घर में कोई भी नहीं था, और पीछे उसके ठीक अपोजिट डोर में जो दूसरा घर था उसके की होल से 11 साल की बच्ची थी। उसने की होल से देखा कि वो कौन दरवाज़ा तोड़ रहा है, उसने क्या ड्रेस पहनी हुई है, और बाकायदा जब वो बंदा अंदर घुसा है वो लड़की चुपचाप आई है बाहर, अपने घर को लॉक किया है। मतलब सी द ब्रेवरी ऑफ दैट गर्ल ऑन दैट सिक्योरिटी माइंडसेट, व्हाटएवर यू से कि मेरा घर है, मुझे प्रोटेक्ट करना है। उसने लॉक किया है 11 साल की बच्ची ने, और फिर भाग के नीचे आ गई है। एंड शी वॉज द गर्ल हु टोल्ड अस कि उसने क्या ड्रेस पहनी हुई है एंड कैसा लगता है दिखने में। मतलब जब हमने बातचीत करी बच्चों को, और बच्चों से ये चीज़ें निकलवाना, क्योंकि दे हैव गॉट अ वेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी, एंड शॉक में भी शी वॉज एबल टू टेल कि उसने दरवाज़ा तोड़ा है, अंदर घुसा है, एंड ब्लैक जैकेट पहनी हुई थी, ब्राउन कलर की ट्राउजर थी, ऐसे करके। सो दैट वॉज द ओनली इन्फो वी हैड, एंड देन टेररिस्ट वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग। उसके बाद फिर जनरली होता क्या है कि हाउस क्लीनिंग ड्रिल में वी आर टॉट दैट ऑलवेज कैरी आउट फ्लशिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। And as Ali, you are aware that house clearing drill is not a easy task. And during that time, mostly if terrorists alone in the house, the orders are ki don't go inside the house. There is, because chances of are more that our own troops will get injured or will get injury unnecessarily just for the behest of entering inside the house. But circumstances were such that orders were that we have to carry out the house clearing drill, and मतलब घर में घुस के मारना है टाइप। इट्स लाइक अपना ही घर है, लेकिन अभी तो फिलहाल तो वो बैठा हुआ है, तो घर के अंदर घुस के मारना है। तो ये सब प्लानिंग करते करते अराउंड 10:30 हो गए। अभी यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि लाइक सिखलाई ही मैंने क्यों ऑप्ट करी, मतलब यहाँ पे वो चीज़ थोड़ी सी प्ले आउट होती है। जस्ट गिव मी 20 सेकेंड्स। Yes, yes, please, sir. सिखलाई ट्रूप्स ना, दे आर सो डोसाइल एंड दे आर सो गुड, दे वोंट आस्क यू अ क्वेश्चन because they believe in the officer. The way officers are taught, the way we are trained to trust our troops. And similarly, there is no doubt of any other troops, but I loved Sikh Light troops before getting commission. So मैंने बोला देखो हम लोग 5 लोग हैं, there was like number 1 entry, number 2, number 3, number 4, number 5, depending upon the kitchen, 2 rooms, the number 1 entry man and 1 as a reserve. So we decided that फर्स्ट एंट्री मैन आई ब्रीफ देम कि जो भी नंबर 1 रहेगा चांसेस हैं कि उसका सर्वाइवल रेट थोड़ा कम है, तो नंबर 2 एंड नंबर 3 ही मेन रहेंगे। एंड फिर मैंने बोला कि देखो उसके पास ग्रेनेड भी हो सकता है, अगर ग्रेनेड फेंका जाता है, ग्रेनेड फटने में कभी कभार सेकेंड्स लगते हैं, उस टाइम पे जिसके सामने ग्रेनेड गिरेगा जस्ट उसके ऊपर लेट जाना ताकि बाकी 4 बच जाए। मतलब ये तक की ब्रीफिंग एक 10 महीने के लेफ्टिनेंट ने जवानों को, जो कि उससे ज़्यादा उन्होंने नौकरी कर रखी है, बट दे हैड दैट ट्रस्ट ऑन दैट 10 मंथ ऑफ सर्विस ऑफिसर कि जो साहब बोल रहा है वही होगा, और उनको पूरा ब्रीफ किया गया। जो सेकंड एडजेसेंट बिल्डिंग थी उसको हमने मतलब परमिशन लेके उनके जो ऑक्यूपेंट्स थे उसको हमने रिहर्सल के लिए किया, कंटीजेंसी केटर करी, एंड ये एवरीथिंग इज लाइक आज ही करना है टाइप में, 1 घंटे के अंदर सब कुछ हो रहा था। पूरी ब्रीफिंग हम लोग कर रहे थे कि दरवाजे के पीछे होगा तो क्या करना है, किचन में होगा तो क्या करना है, इस तरह से। बट दिस सेंटेंस ऑफ माइंड नाउ आई स्टिल रिमेंबर दैट मैंने कैसे उनसे बोला कि बिकॉज आई वॉज ऑल्सो प्रिपेयर्ड कि अगर मेरे सामने ग्रेनेड आएगा मैं लेट जाऊंगा, एटलीस्ट 4 तो बचेंगे मेरे जवान, वरना ऐसे तो हम 5 इंजर्ड हो जाएंगे और ऑपरेशन पूरा फेल हो जाएगा। तो मिशन सक्सेस वाज द प्रायर इंपॉर्टेंस एट दैट टाइम। So around 11:50 के करीब, like 11:45, 11:40, I gave my CO कि sir we are ready mentally also and we have rehearsed all the strategies. And good point was that the CO left me free. There was no infringement in planning, nothing. मतलब it was told कि Thakur, your operation, you do it the way you want to do it. Whatever is required, you just ask her. So nobody came, no senior officer, no company commander, no CO कि तुम ऐसे नहीं ऐसे करो. It was completely left on me. So now when I look back, I feel that we have to trust our junior leadership. Like, sometimes you just have to tell the task. You don't need to tell how to do it. I think they will do a better job. The similar way I did at that time.
And this thing I carried with me, and somehow it has helped me till now, that trusting the juniors, because they know they will create wonders if you give them freedom. I told 11:40, sir, I'll be going. So he said, okay, what is the sequence? I said, ki, sir, number one is Sipahi so and so, number two is me, and number three is so and so. He said, no, Thakur, do one thing. You go as number three, because I believe there were factors. CEO also thought that number one might not be available, number two might be injured, number three is the one who's going to make a difference in that. I said, so nothing done. We have rehearsed for every situation position. She said, okay, go. It was given a go ahead. And 11:50 we started moving towards the house in that typical formation which you see in the movie, one behind the another, with AK, BPJ, Patka and everything. And imagine my plight that we have just moved to the field, and BPJ, BPP I have not worn so many times. It was uncomfortable, but yes, when lives are at stake, you compromise to that thing. We entered, and I remember climbing, getting into that dark alley, then climbing that staircases. I still remember there were 11 staircases, and those 11 steps, with every step I was remembering almost my all life moments. Like I was like, one thought came to mind ki, Thakur, you are the only child here, no brother, no sister, who look after your parents? It's like that, because I don't have any brother sister. My parents were oblivion ki what I'm doing at that time, no mobile, nothing. I was just on my own. So then came ki, अच्छा यही तो करने तो चाहता था. People they come here for so many years. We have heard the talks that they go without any encounter. Very rarely it happens. And तुझे तो जल्दी मौका मिल गया. Then came, अच्छा अभी अगर नंबर वन को हो जाएगा, गोली लगेगी, सब चिल्लाएंगे, कैसे कंट्रोल करेगा. In these 11 steps I was thinking so much that I had never thought कि मैं इतना सोच पाऊंगा in those 11 steps. And that just happened in a flash of a second. The life goes around you, your school life, your NDA course-mates, IMA, and then briefing. Then again you focus back, okay, this is the mission right now. And we started climbing, and the door which was supposed to be latched from inside but was not latched because the terrorist has broken, he has barged inside it, so it was open. So we just, the moment we opened the outer, that जो एक दो दरवाजे होते हैं ना जाली वाला, तो जाली वाला जैसे ही बाहर की तरफ खोला, दूसरे हाथ से, मतलब नीचे नंबर वन बैठ गया, नंबर टू ने पहला दरवाजा, नंबर वन ने नीचे बैठ के जाली वाला खोला, नंबर टू ने उसके ऊपर से लकड़ी वाला खोला. एंड जैसे ही लकड़ी वाला खोला, एंड आई वाज नंबर थ्री, एकदम सट के खड़े हुए थे, लाइक 2 shots फायर्ड इन फ्रंट ऑफ माई, लाइक ऐसे गए जुप जुप इस तरह से, 2 shots फ्रॉम इनसाइड. But then my number one was like, we have rehearsed so much with the mock grenades and grenade with the pin, that he threw the grenade inside and blasted. Then my number one entered inside the right room, and number two entryman for the other room, and simultaneously behind him only I went into the kitchen. And in the kitchen it was like room maybe, like they were throw the grenade, and wherever the terrorist could be they fired. And in the kitchen when I entered, it was like a smoke inside, because the grenade actually which was thrown by us, it has rolled on, and there was a very small, it's a 2 BHK small quarters for the MES guys. It had rolled into the kitchen, and it blasted at the door of the kitchen. And somehow I could locate somebody is like lying or sitting, and I just fired like 2 shots. It went into something black, like I think it was his head at that time, and later on we checked it was a head only. So he was like sitting and maybe about to do something, but before that the grenade and my shots, they neutralized the terrorists. So what has happened is, with our grenade also blasting, and he was holding his own grenade also in his hand, they both almost got blasted together, and whatever life was left in it, that was finished off by my fire into his head. And it went in flashes, and I was like relieved. And I think I double checked myself, any injury. I checked my troops also, number one, number two, and the man who was at the entry. Everybody was like perfectly fine, nothing has happened. And we were amazed ki terrorist is killed, and no injury, neither a superficial or any kind of, no matlab, even not even a glaze of anything. And I just, at that time my heart was like pumping so hard, and I was not believing myself कि यार ये मतलब कुछ ज्यादा आराम से नहीं हो गया ये. But yes. My God. So like we were
created so many contingencies. The army teaches us that you cater for 100 contingencies, the 100 first will happen. Maybe the mentally we were so prepared and we were having so much trust in each other that ki mission will not succeed, ये तो दिमाग में था ही नहीं. But yes, we had कि हाँ थोड़ा बहुत होगा ऊपर नीचे but adjust कर लेंगे. But it will go like we call it that clean cut operation. We were like amazed on ourselves also. And finally जब उसको तसल्ली से देख लिया कि हाँ मर ही गया है, थोड़ा सा ड्रैग कर लिया, फिर मैंने निकाला मोटरोला एंड आई कॉल्ड अप माय सीईओ कि सर mission successful, no injury to our own troops, one terrorist killed in action. So फिर उसके बाद मैंने मोटरोला खोला, then I said ठाकुर हो गया and I congratulate my troops. उनको मैंने इकट्ठा किया, फिर उनको बुला के दिखाया and तब तक सीईओ वगैरह भी नीचे से आ गए. फिर मैंने रोका, मैंने कहा सिर्फ only I would request because he might have tripped some grenade and all those things, because during this operation the 2 terrorists who were killed, one before dying has kept a grenade under him without a pin, and moment his body was dragged, the grenade blasted. So in this case also I was apprehensive that in this terrorist case also, so I said, sir, he's dead, that I'm sure, but I would request, I think we should not be moving anything, because at that time, no, I think I was more alive to the situation compared to everyone else, because everyone else was thinking ki something, one casualty or injury must be there, but when no casualty has taken place, terrorist is dead, though even they were also not believing. But then I told my CEO this thing. CEO said, okay, nothing doing, nobody will come inside the house till tomorrow morning, let it be like this, whatever is here. And a guard was placed around the house. The information was conveyed to the brigade commander who was responsible for the operation. Subsequently the GOC and the corps commanders at the higher level also were informed. So everybody was like amazed कि कर दिया, कोई इंजरी ट्रूप्स को नहीं सर, कोई इंजरी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है. पुलिस हाउस क्लीन ड्रिल करी थी, हाँ टेररिस्ट जिंदा था, हाँ सर जिंदा था, मारा उसको घर में घुस के. So that moment was too good. And coming to your point, Ali, मतलब जितना जोश type right now you are similar at that time also. And as a good junior and as a good senior, I think we interacted at that time, and I feel that it was good that I met you at that time, because I still feel that Josh inside you. And later on, if you remember, we did one more operation together, that long range Yes. patrolling, and that lot of mobile checkposts we established. We kept on bumping each other, and the respect you showed me at that time, you have shown me very met in Calcutta and even in online, and it is so humble and so good about you. I'm really impressed. Sir, I genuinely, मेरे को बहुत कम मेरी moist eyes होती हैं, but honestly, when I was listening to you, luckily I'm wearing specs. Luckily I'm wearing specs. I had moist eyes when I was listening to you, because और जब लेफ्टिनेंट साहब अंदर घुसे, मैं लेफ्टिनेंट ठाकुर ही बोलूंगा सर को, ठीक है, उस टाइम पे. तो जब वो लेफ्टिनेंट साहब अंदर घुसे, तो आउटर कॉर्डन एक होता है, इनर कॉर्डन, एक होता है आउटर कॉर्डन. तो आउटर कॉर्डन पे हम बाहर थे, हम वी वर गिविंग काइंड ऑफ कवर और व्हाटएवर. तो इन केस जस्ट इन अदर कंट्रीज, इन केस ही रन्स और व्हाटएवर द मिलिटेंट द टेररिस्ट फ्रॉम देयर, तो हम वहां पे उसको वहां पे चेप देंगे. बट द हीरो ऑफ द ऑपरेशन emerged as Lieutenant Madan Thakur was the hero of the operation. And हम लोग इतने fascinated हुए, और मेरी I was, सर ये जाड़ों की बात है, 2003 में इतनी ठंड थी वहां पे, इतनी ज्यादा ठंड थी. और I remember when sir, after the operation was done, हम ब्रिज पे बैठ के सर और मैं बात कर रहे थे, मग का ग्लास था, चाय थी हमारे पास में. सर बता रहे थे जब मैं ऊपर चढ़ा था जाड़ों में, तो पसीने आ रहे, तो मगर the thrill, the excitement, the eagerness to go in there, and मैं इतना सर से जेलसी तो नहीं बोलूंगा, एनवी हुआ बहुत. काश ये मौका मेरे को मिला होता. माय गॉड, but that is what you said was very right. यही तो करने आए थे. I mean, these kind of, and very few get an opportunity like this. इसमें one terrorist was killed in by sir. इसमें sir got a commendation card, the chief of army staff commendation card. If you ask me personally, bravery तो bravery होती है, चाहे आप 50 टेररिस्ट मारे, चाहे आप एक टेररिस्ट मारे, चाहे आप मारे भी ना, आपने bravery करी, आपने एक act of bravery was shown. And this, if you ask me, as you rightly said sir, number 1 जो होगा, and अगर ग्रेड आता है उस पे लेट जाना ताकि बाकी के लोग बच जाएं, that itself is so brave. और जो मिशन आपने किया उसको मैं बोलूंगा, it was more or less uncertainty, it was like a suicide mission also.
इतनी डेयरिंग चाहिए होती है करने के लिए दोस्तों, एंड दैट इज समथिंग आई विल नेवर फॉरगेट। उसके बाद भी हमने ऑपरेशन करे, एंड खासतौर से टांडा टीसीपी पे सर, मैंने गो अर्ली मॉर्निंग सुबह 4-5 बजे रोड ओपनिंग के लिए, इट वाज ग्रेट फन सर्विंग विद यू। फिर जब आपसे, अच्छा बाय द वे, तो 2008 में मैं फौज से सेवानिवृत्त हो चुका था। उसके बाद आई वुड स्पीक, ये मेरा पहला ऑपरेशन था ना फौज में, फर्स्ट टाइम एवर आई हैड सीन बुलेट्स फ्लाइंग एंड आई हैड सीन एक्शन एंड गोलियां फायर करी। तो दैट ऑपरेशन हैज स्टेड विद मी फॉरएवर। मैं तब लेफ्टिनेंट ठाकुर साहब, विदाउट पुटिंग द फर्स्ट नेम एंड विदाउट नेमिंग द पलटन द लोकेशन, आई वुड टॉक अबाउट लेफ्टिनेंट ठाकुर साहब थे एपिटोम ऑफ ब्रेवरी, हाउ आई वुड परसीव। सर उसके बाद ना मैं जम्मू कश्मीर से नॉर्थ ईस्ट गया। मैं आई वेंट एज एडीसी टू जीओसी 3 कोर एंड स्टाफ पे था मैं, एडीसी स्टाफ ड्यूटी, बट आई हैड अ गुड नेटवर्क, सो वी वुड गेट गुड इंटेलिजेंस एंड गुड इनपुट फ्रॉम पीपल। जो स्पेशल फोर्सेस बटालियन विच वाज डिप्लॉयड इन द नॉर्थ ईस्ट इन मणिपुर, तो उनके साथ कर्नल नेक्टर साहब, यू नो ही इज डेकोरेटेड, वेरी ब्रेव, माने हुए, उनके साथ मैंने ऑन स्टाफ था, मैं उनके साथ मैंने ऑपरेशन करा, एंड इट वाज लाइक ग्रेट सर, आई मीन सक्सेसफुल। सो आई वाज ऑलवेज ब्लड थर्स्टी, चाहे मैं फील्ड में हूं, चाहे पीस में हूं, चाहे स्टाफ पे हूं, चाहे डेस्क पे हूं, चाहे कागज पे हूं। आई हैव बीन वेरी वेरी फैसिनेटेड सर। आपने जो ब्रेवरी दिखाई है काबिले तारीफ है सर। ये वही रही बात जम्मू कश्मीर की हमारे, क्योंकि जेएनके से उसके बाद फिर मैं नॉर्थ ईस्ट आया, फिर मैं असम राइफल्स में। सर आपका बड़ा अच्छा तजुर्बा रहा है नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया के साथ भी। आप यू हैव फ्लोन ओवर एंड सम वेरी डिफिकल्ट टेरेन्स, एंड we all know that in northeast part of India, I have flown over there, I mean not as a pilot, as a passenger of course. So वहाँ पे 12 RNO फ्लाइट थी, when they would fly तो मौसम बदल जाया करता था बिल्कुल। I remember एक बार हम त्रिपुरा गए थे, तो कर्नल रॉटनी सर थे, he was the CEO, he was commanding the RNO flight, and every day we would make an attempt कि हम त्रिपुरा से नागालैंड किसी तरह लैंड करके हम सुबह जाते थे, but half पे we would come back for safety purpose। तो हम 4-5 दिन वहाँ पे अटके रहे। So, sir, tell us about your experience in the northeast part of India, sir, as an aviator. Okay, so as an aviator, northeast part, the northeast weather जैसे आपने अभी बताया ना कि बहुत जल्दी बदल जाता है and quick decision लेना पड़ते हैं। Now, sometime what happens कि situation comes, जैसे especially I'll go about a story about a life-saving situation which happened. Generally, what happens after 12 o'clock, there are a lot of updraft and downdraft. The earth gets heated up and the आपके बहुत से कमेंट्स भी आ रहे हैं सर यहाँ पे, बाय द वे मैं कमेंट हाईलाइट नहीं कर पाया, पर बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं आपके लिए। Thanks a lot. Thanks a lot. So there was a casualty, brain hemorrhage happened to one of the infantry guy in Tawang sector. So requirement came for a casualty evacuation. Now I was told, okay, Thakur, you go, and it was single hector operation at that time, and it was only one casualty I was told. So I went, एक तवांग के पास एक हमारा हेलीपैड है खिरमू करके, खिरमू में जैसे ही मैंने लैंड किया, आई सेड कैजुअलिटी। तो आई हैव कैलकुलेटेड माय कमिंग एंड गोइंग बैक, फ्यूल कैलकुलेशन, ऑल ऑफ वेट जो हम कैलकुलेशन करते हैं एज अ पायलट फॉर वन कैजुअलिटी एज इट इज। Now when the casualty came, the one attendant also came inside, and cheetah hector, as you know, are very small in size, and we have to be very very precise in calculation. Now the individual along with him came was a attendant. I said कि attendant I can't carry, मुझे बोला था एक ही पैसेंजर, एक ही कैजुअलिटी है। He said कि सर अगर आप अटेंडेंट लेकर नहीं गए ना तो ये मर जाएगा हवा में, because he was supposed to requiring that assistance total en route about next balance 1 hour flying. So it was a very dilemma situation for me. I cannot reduce my lock weight, I cannot let the casualty be there, and if I take off I have to use my superior piloting skills. And there is a very famous saying in the aviation that you should be coming to a situation where you have to use your skills, utmost skill at a very grave situation. So I said, okay, let's see what happens. So Tawang Valley is very narrow. If anybody would have flown in that valley, the Tawang River Valley is quite narrow valley. So when the sun comes up, the one side is shadow and one side is heated up. So on the heated up side, there are always updraft. And Sela Pass is at around 13,500, and clouding has started building up. So I said, okay, let's try. I was hovering at my almost max power. Still, somehow I took off, and I carried out we call it spiral climb with the help of updrafts which were there. It's like the terrain was rising on towards the China side because they were updraft, and I was climbing with my hector like this. So once I reached to around 16,000 feet, almost near the cloud level,
I started coaxing my Hepter towards Sela Pass. Now what happens that vertical component getting broken into horizontal component, the rate of climb will almost cease and you start almost descending. So now it is like from 16,000 feet you are descending, and you have to cross that Sela Pass. If I cross Sela Pass, then I'll be okay. But if I go down below that, then again, it will be a very precarious situation to save the Hepter from crashing into the mountain, all those things. So I climbed, and when I Hepter said ki I can't climb anymore, I started coaxing towards Sela Pass. And then you won't believe, like 13,500, I just grazed Sela Pass from 13,750 or 800, like almost 200 feet above the pass and into the Dirang Valley, we call it. And then I thanked my stars, and I asked the passenger behind, ki he's theek hai ye? He said ki sab theek hai. Then we took him to that base hospital, Tejpur, and we dropped the passenger. And next day the call came, and after a few days back, the do from the CO also came. That individual was fine, and if we have not taken him that day to the hospital, he would not have survived. So that, like, one situation where, what I feel, there is always a way out, whatever may be the situation. If God has put you in a situation, in a problem, the solution also will be there somewhere, and you just have to find it, work upon it, and it will definitely come out. So this was just like one. I got many to share such like incident, but it was just many. Like in one infantry I took life, and in second I saved someone's life. Wow, sir. Wow, wow, wow. Very well put by you, sir. And God bless you for this. Really, sir. मतलब आप ना, आपको पता, when I met you 20 साल के बाद तकरीबन, हम भी हक नहीं चाहते. मैं कहा सर, ठाकुर सर आप कहाँ थे? आपके बारे में मैं पता नहीं आपको मैं कितना याद करता हूँ, कितना बोलता हूँ, हर जगह पे मैं आपके बारे में बोलता हूँ. मैं ऐसे लेफ्टिनेंट ठाकुर. एंड फिर मैं आपने कहा हाँ, यू ऑल्सो मस्ट बी थिंकिंग यार इट्स अनबिलीवेबल कितने साल के बाद टॉक्स लगा. फिर मैंने आपको टॉक्स के लिंक्स भेजे. हाँ. फिर मैं आपको दिखाया सर, ये देखिए, ये आपके बारे में हकीकत में मैं बोला करता था. And so I consider myself very fortunate and very lucky. I have learned from seniors like sir. I have seen hardcore operation with these special forces with Colonel Nectar. What bravery! I mean, फिर मैं Assam Rifles गया. Assam Rifles में sir, my commanding officer was from Grenadiers, Brigadier Gautam Ganguly, now retired. तब Colonel Gautam Ganguly, and the demo officer, brave officer. Sir, like even though he was a commanding officer, कभी उन्हें interfere नहीं किया. Again, जैसे आपने बताया ना कि the operation is yours, go ahead, you own it, it's yours. Whatever you require, we will give you, we'll back you up. मैंने अपने my CO would lead on the front. I have had the honor of learning from him on ground. हम लोग एक long range patrol में गए थे, हमारा आमना सामना हो गया with the undergrounds, and we were there. Luckily, I speak the local language also. थोड़ा बहुत मैं थोड़ा local language में किया, but CO, अच्छा, as a junior officer, as an average company commander, it was my responsibility to guard him, right? But CO was more concerned about my safety and the men's safety. वो आगे आ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ उनको पीछे कर रहा हूँ, आप पीछे रहिए, मैं डील करता हूँ, नहीं तुम पीछे रहो. Like great, मतलब जो तजुर्बे हुए हैं, you would be having so many such stories. सर ये बताइए, अभी आप फौज से सेना में नियुक्त हुए हैं पिछले महीने, तकरीबन एक महीना थोड़े दिन और हुए हैं. So what are your plans now, and how do you plan to imbibe the learning which you got from the army to the corporate now, sir? So, Ali, I retired last month on 3rd of April. I took that premature release from the army after serving around 20 plus years in the army. So, I wanted to grow, like from infantry से मैं aviation में गया. Aviation में भी फिर मुझे लगता था कि और कुछ करना है, तो मैं flying instructor तक बन गया. And I have been an instructor in the combat aviation training school for almost 3 years. So I wanted to grow, I wanted to do something more. इसीलिए like last year मैंने IIM Calcutta से भी एक course किया 1 year का. उसके बाद I kept on upskilling myself like PMP and certified Scrum Master, whatever. I hate interrupting, but I can't resist when I hear anything of my alma mater. तो IIM Calcutta में मैंने resettlement course वहाँ से अपना management वहाँ से की थी सर, मैंने 6 महीने की. Okay. So it's a 1 year course while in service, right? And so you mean say when I met you that time you're not doing this course. I met you in Calcutta only. I was doing that course at that time from IIM Calcutta. Oh, okay. So ये कौन सा course है आप बताएंगे? Because I being alumni, I'm not aware of this 1 year course वाला. Okay.
So then the resettlement course from IIM Mumbai I did, and subsequently I retired from 3rd of April. And I'm like, I want to take my whatever learning the army has given me with respect to the leadership, the qualities, the decision taking capability, or the how to handle the various situations in which you literally, somebody will say ki, I can't do it, but as an army personnel you always know that if the problem is there, solution will also be there. So that way I have prepared myself for the corporate, and I'm like right now looking into the various opportunities which might come up, and subsequently I would like to take that decision consciously. So presently in Calcutta, enjoying my family and my children's, along with my daughter and my son. And I just happened to see you at that post, and that's why I said, okay, let's reconnect again with Ali. How is he doing? And I never knew कि कल बात करके Ali will tell कि सर आज ही आपसे करना है. बातचीत. मेरे को इतनी खुशी हुई जब आई वाज देयर द स्पीकर फॉर द वेटरन समिट परसों, तो आपने मेरे को व्हाट्सएप पे फोटो भेजी, दिस योर फोटो? यस सर, ऑफ कोर्स. मैं इमीडिएटली आपको रिप्लाई किया, यस सर दैट्स योर यंगस्टर्स फोटो ओवर देयर. एंड फिर वहां से फिर मैं आई रिक्वेस्टेड यू, फिर आपने बताया कि यू हैव हंग अप यूनिफॉर्म. जैसे ही मैंने ये सुना सर, यू विल नॉट बिलीव इट, आई हैड दिस इन माय माइंड कि सर जिस दिन रिटायर होंगे ना, मेरी ख्वाहिश ये थी जिस दिन आप रिटायर हुए उस दिन शाम को करूंगा. मैंने कहा था खैर सम ऑफिसर्स आई हैव बीन वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ, तो ऐसा नहीं है आई हैव बीन वेटिंग फॉर देम टू रिटायर, मगर ऐसा भी नहीं है. बट आई सेड नाउ पाबंदी नहीं है, बंदिश नहीं है, नाउ वन कैन कम एंड स्पीक. तो द डे दे हंग अप द यूनिफॉर्म आई कन्विंस्ड देम मच टू देयर रिलक्टेंस, सर मेरे को आज ही दो, शाम इसी में ही है. तो मेरे जहन में काफी टाइम से था कि जिस दिन सर विल हंग अप द यूनिफॉर्म, क्योंकि वो ऑपरेशन मेरी जिंदगी का यादगार रहेगा. तो कहते ना, your first experience in life is always most memorable. It can be your first smoke, it can be your first drink, it can be your first kiss, it can be your first on anything. So that's why ये मेरी जिंदगी का first experience, and I was very fortunate to do it with sir. And जैसे सर ने सीख लाए सोल्जर्स के बारे में बात करी ना, मेरा जो राब्ता, जो रिश्ता सीख लाए ट्रूप के साथ, फिर से अगेन कमिंग रिलेटिंग बैक टू नॉर्थ ईस्ट, मणिपुर में था. Manipur mein my father was commanding a brigade there. That time sir 14 Sikh live were under him. So that time जो former vice chief of army staff General Anbu, तब वो मेजर साहब थे वहां पे उस टाइम पे. एंड मेरे उस टाइम पे फ्रेंड्स थे. मैं अब तो बहुत सी आई हैव लॉस्ट टच. तब मैं उनको, मैं ये 97 की बात बता रहा हूँ मैं. तो लेफ्टिनेंट मोहित नवरजोग, लेफ्टिनेंट नवजीवन, सेना मेडल है. लेफ्टिनेंट नवजीवन हैड कम फ्रॉम द रैंक्स and he got a Sena medal for an operation, जो मेरे सामने की बात है ये. तो तब से मेरे अंदर वो खुजली थी उनको देख देख के. मैं कहा लेफ्टिनेंट साहब 2 स्टार लगा के, मेरे लिए तो इट वाज वर्थ मोर देन अ मिलियन इन द स्काई. मैं कहा लेफ्टिनेंट साहब 2 स्टार लाए, घूमते आए. एक खुजली थी मेरे अंदर. एंड द डे आई पुट ऑन माय यूनिफॉर्म, सेम सर, मेरे को इतनी खुशी हो रही है, आई कांट टेल यू. इट्स बीन वन ऑफ माय बेस्ट कन्वर्सेशंस आई वुड से, बिकॉज़ यू हैव बीन माय हीरो तब से सर. एंड सर आपको एक बात और बताऊंगा which would be very encouraging. I hate speaking much. आप अगर मेरे इंटरव्यू देखेंगे, आप देखेंगे कि मैंने बहुत कम उससे बात करी है, but this is something very pertinent to you. That's why सर 2008 में IIM कैलकाटा से सेना नियुक्त हुआ मैं. उसके बाद and I joined a corporate company called Lt Col Limited. Thales is a arms company based in France. It's a French company. They deal in submarines, jet planes. You know, they are huge company, huge. And Rolta is an Indian company which was primarily into GIS, large scale imaging, IT. They merged together. So I joined Rolta Thales Limited. अब सर 2008 से डिफेंस प्रोक्योरमेंट रुका हुआ था. एक्चुअली there was no like if you go the DPP, the defense procurement procedure, DPM, defense procurement manual, कोई purchases हो नहीं रहे थे, धंधा नहीं आ रहा था. तो तलवार लटकी हुई थी. We were like thinking कि बिजनेस भी नहीं आ रहा, तनख्वाह तो आ रही है कंपनी से, मगर कब तक सस्टेन कर पाएंगे. तो 4 साल कंपनी में काम किया. फिर 1 साल फिर मैं चला गया महिंद्रा डिफेंस सिस्टम्स. वो भी थैंक्स फॉर वी स्पोक अबाउट टाई, ओल्ड स्कूल टाई. आई कनेक्टेड विद आनंद महिंद्रा हु इज फ्रॉम माय स्कूल. वो भी ओल्ड स्कूल टाई केम इनटू प्ले. सर 2014 के बाद आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया के बाद, द डिफेंस सेक्टर हैज ओपनड अप टू कंपनीज लाइक, पहले डीआरडीओ यूज्ड टू हैंडल ऑल अबाउट द आर्मीज, look after the army. Now private players have stepped into the market. There are very many, so a lot of employment opportunities have come about, especially for defense personnel in companies like Mahindra Defense Systems, Ashok Leyland, Tata Defense, this L&T Defense. So
apart from security, जो पहले लोग कहते हैं फौजी आदमी तो बंदूक लेके सिक्योरिटी करेगा ना, there's so much, and a फौजी can do management, he can do HR, marketing, accounts, we are prepared for everything, they train us for everything. And मैं आखिरी में एक चीज और बोलूंगा, ये सर ने सीख की बात करी, तो जनरल वीपी मलिक जो सीईओ जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे कारगिल के टाइम पे, वो सीख से हैं। जनरल विक्रम सिंह जो मेरे जीओसी थे, हमारे जीओसी थे बल्कि वहां पे, नहीं आप यू वुड हैव मूव्ड आउट परहैप्स, डू यू सर्व देम? No, I was his ADC also for some time after the operation. Okay, sir. Okay, sir. He was So GOC tender now you as ADC for some time. all right, For sir. for 5-6 months. You were in Colonel Pankaj Sharma, Sera Medal. Yeah, he went वो एक और for ऑप्शन है, एक और डेमो ऑप्शन है, 16 सीख लेंगे। वो एक और ऑप्शन है, जब मैं सांबा गया था सर एज एम्पायर फॉर फील्ड फायरिंग, तब वो एडजुटेंट साहब थे, उनके ऑफिस में बैठ के चाय पी रहा था, ऐसा एक ग्लास था, यहाँ पे कॉम्बैट का कपड़ा लगा था क्योंकि गर्म चाय थी इसके लिए, एंड देन आई सॉ हिज पैड, लेफ्टिनेंट पंकज शर्मा सेना मेडल, ऐसे मैं कहा वाओ यंग, तब मैंने आपका भी जिक्र किया था उनसे उस टाइम पे, एंड लुक एट द आयरनी, आई मीन फॉर सम टाइम यू आल्सो, तो जन विक्रम जनरल नारवाने वो सब सीखलाई से हैं, जनरल अंदूर की मैंने बात की, द वाइस चीफ, सो सीखलाई पल्टन हैज डन एक्सीडिंगली वेल। सो बिफोर आई लेट यू गो, आपसे गुफ्तगू में देखिए 46 मिनट्स तो ऐसे ही हो गए हैं, एंड बिफोर आई लेट यू गो so before I let you go, any last message you would like to throw out in the universe from your end, sir? Kuch bhi, sir. I would like to say that there is no problem which cannot be solved or which cannot be overcome. It's like you just have to maybe wait for it or look into the problem only. The solution will lie over there. Like I said, when I was tasked to take a life, it was a problem over there, but still I came out with my team unscathed. Solution was there. Maybe the preparation is required from all the ends, and communication is the key things in that. Secondly, when I saved the life, again it was a problem which I was able to solve because of my determination, or maybe the training which has gone into it. So I believe there is no problem which cannot be solved, whether it is personal, professional, or at whatever level. We just have to maybe sit back and see it again and again. The solution will be there somewhere around the problem only. Very well said, sir. Sir, thank you very much and sincerely thank you for this time. And I am just sending the link to you in a minute. इसको शेयर करते हैं दोस्तों, इस गुफ्तगू को आप शेयर करिए. सर बहुत अजीज हैं, खास हैं, very special, very dear. And sir's been like my icon, I would say, for the longest years. Sir, thank you very much. Jai Hind, sir. Thank you, Jai Hind. Take care. Sir. Just going off air, sir.